All right, so let's say you've got this graph. I'm just going to draw here. This is your y-axis, and this is your x-axis. और आपके पास एक curve है that looks like this. Y equals x cube plus 3, let's say. आपके पास ये curve है y equals x cube plus 3. ठीक है? Now, how is this curve going to look like? इसका ना graph कुछ इस तरह का होता है. So if I were to draw it here, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं. इसका graph यहाँ पे ऊपर ऐसे जाएगा और नीचे जो है it's going to be like this. So this is the graph of y equals x cube plus 3. Now, how do you differentiate this function? Y equals x cube plus 3. इसका derivative क्या होएगा? Anyone? 3x square. 3x square. 3 आके नीचे multiply हुआ. X की power by 1 reduce होगी. 3 minus 1, that is 2. 3 का derivative क्या होता है? That is simply 0. Just ignore that. इसका derivative जो है that is 3x square. अब derivative का मतलब क्या होता है? Derivative क्या represent कर रहा होता है? Anyone? The equation of the gradient of a specific curve The gradient. at any point. Yes, so this derivative here, it represents the gradient of the curve at any point. Gradient of the curve at any specific point. What does that mean? That means अगर आपको x equal to 1 पे for example इस curve का gradient find करना है, आप x equal to 1 input कर दो इसके अंदर 3 into 1 का square. इसका मतलब है कि जब x की value 1 है इस function में तो आपका gradient 3 होगा उस point पे, and so on. तो आप एक किसी भी point के ऊपर आपको gradient चाहिए, all you need to do is you need to input that value of x here और आपको उस point पे उसका gradient मिल जाएगा. ठीक है? So that's what this derivative represents. ये आपका gradient का function होता है for any curve like this. Now, what you want to do is you want to understand two terms here. One is tangent that I'm sure you already know of. So equations of tangents and normals. And the second term is normal, and that is something new for you. ठीक है, वो आपको पहले से आपको शायद आपने नहीं सुना हो, most of you at least. So how is the tangent going to look like? Let's say मैं यहाँ पे एक point लेता हूँ. Let's say it's this point here. यहाँ पे x की value 2 है. ठीक है? If the value of x is 2 here, what do you think is going to be the value for y here? Y coordinate पे क्या value होगी इसकी? Any idea? 11. 11. Why? Because अगर हम 2 जो है अपने function के अंदर input करें, what do we get? We get 11 from that. So y equals 2 का cube plus 3. That gives us 11. So जब x की value 2 है इस function के अंदर, this is the graph for y equals x cube plus 3. Remember, you'll see curve का graph है. इस पे किसी भी point पे अगर आपको एक coordinate पता है, दूसरा coordinate find कर सकते हैं, of course. तो अगर आपको x coordinate 2 पता है, you can just input that value in the function और आपको corresponding value for y मिल जाएगी. So इस point पे अगर x coordinate 2 है, तो इसका जो y coordinate होगा, that is going to be 11 here. All right? अच्छा. अब इस point पे, what if we draw a tangent? What is that going to look like? सर वो इस तरह होगा ना, इसकी ग्रेडियंट की इक्वेशन की तरह का होगा. इससे ग्रेडियंट की इक्वेशन की तरह का होगा, लेकिन हम सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कह रहे हैं. इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कैसा है? पैराबोला बन जाएगा सर.
या वो तो 3x स्क्वायर है, वो तो एक कर्व है ना, वो तो एक पैराबोला बनेगा, वो तो आपके हर पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वी आर जस्ट कंसीडरिंग दिस स्पेसिफिक पॉइंट, इसके ऊपर टेंजेंट कैसे बना सकते हैं आप, जिस तरह O लेवल्स में बस करते एक थे, पॉइंट से राइट? कनेक्ट कर। हाँ, इस पॉइंट सिर्फ इस पॉइंट से पास करना चाहिए और उसकी डायरेक्शन जो है वो कर्व की डायरेक्शन के उसके सेम होनी चाहिए। So it may look something like this. The gradient, the tangent at this point, it's not a very good tangent, it's intersecting the curve that I just drawn here. So let me draw another one. This might be better. सर साइन और कॉस के ग्राफ के टेंजेंट बन सकते हैं बिल्कुल बन सकता है। एक्सेप्ट ऑन टॉप एंड नीचे उसमें स्ट्रेट लाइन के अलावा टेंजेंट आप किसी भी पॉइंट पे बनाते हो, उसका मतलब ये होता है कि इट शुड ओनली, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इफ यू गॉट दिस ग्राफ, अगर इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनाते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी को कहीं भी और कट नहीं करना चाहिए कर्व को। आप इस पे टेंजेंट बनाते हो, टेंजेंट की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप ऐसी लाइन बनाए जो इस पॉइंट से पास करे और उसकी डायरेक्शन वो हो जो कर्व की डायरेक्शन है। It may intersect at another point later on in the curve, and that's totally fine. इसमें मसला नहीं है। For example, ये tangent जो ये है, मैं लेकिन क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा था कि एक जगह से सिर्फ इंटरसेक्ट करनी चाहिए फिर उसकी या quadratic equation में सिर्फ एक जगह पे intersect करता है। और if you've got a graph like this और cubic graphs के अंदर भी it's possible कि वो एक point से ज़्यादा पे touch कर जाए। So वो हम क्योंकि circle के definition के साथ relate करे थे वहाँ पे quadratics में भी वही चीज़ apply होती है। So we just used that from there, but in a general curve, it is possible कि वो tangent किसी और point पे जाके दोबारा से intersect कर जाए. So that is possible. The only thing that's necessary is कि सिर्फ उस point से pass करे, direction वो हो जो उस curve की direction है उस point की. Okay, so let me draw that here now. So your tangent is going to look like this. यहाँ पे अगर मैं tangent draw करता हूँ, it may look something like this. Let me correct that now. Good. Yeah, so this is better. So ये आपका tangent है यहाँ. Now what you want to understand is कि आप इस तरह के tangent की equation कैसे find कर सकते हैं. So this is a straight line, right? Tangent आपका is always going to be a straight line to any curve. आप किसी भी point के ऊपर tangent बनाते हो, it's by definition a straight line. इसकी हमें equation find करनी है. ये आपका tangent है, ठीक है? एक हमने इसकी equation find करनी है. And there's another term that we're going to use, and that's called normal to a curve. All right, it's called normal to a curve. And what does that mean? जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया है, टेंजेंट की अगर परपेंडिकुलर एक लाइन बना दे यहाँ पे, so what would that look like? That's going to look like something like this. तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे, इस तरह से. This thing is called normal to the curve. ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है और इसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द कर्व. ठीक है, टेंजेंट तो आपको पता है, अब उसी पॉइंट के ऊपर अगर हम उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देना, उसको हम नॉर्मल कहते हैं. ऑलराइट, सो इट्स जस्ट as simple as that. Is that okay? इसमें कोई प्रॉब्लम? जी सर. Okay. Anyone? Okay. So now the problem is, how do we find the equation of this tangent and the equation of this normal? ठीक है, अब हमें ये figure out करना है. So let's do that here. Equation of a tangent. ये चीज हमें find करनी है, and we need equation of the normal. Now for both of them, we've got one thing already. We've got a point that lies on these lines. देखिए जो 2, 1 point है, ये tangent पे भी lie करता है और normal पे भी lie करता है. Right? So tangent भी इससे pass कर रहा है, normal भी इससे pass कर रहा है. So you have a point already. What else do you need to find the equation of the line? एक और चीज चाहिए आपको. What is that?
Sir, gradient. So Gradient intercept. That's the gradient, right? You only need sorry. the gradient in addition to a point on the line. तो आपके पास दोनों के अंदर point है, that is 2 and 11. So tangent भी इससे pass करता है और normal भी इससे pass करता है. Now what about the gradient of the tangent? What do you think? फिर आप Sir, x की वैल्यू 3 डालें इसके पे अंदर। अपने 2 पुट करेंगे। ये जो dy over dx है, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमें उससे क्या मिलता है? हमें उससे इस पॉइंट के ऊपर कर्व का ग्रेडियंट मिलता है. And since the curve has this gradient, तो उस tangent by definition is a line that has the same direction as the curve at that point. तो tangent का derivative भी वही होगा, tangent का gradient भी वही होगा जो उस curve का gradient है at that point. ठीक है? हम O levels में उल्टा करते थे. हम पहले क्या करते थे? हम tangent draw करते थे, approximately उससे एक approximate value of gradient find करते थे. और हम कहते हैं जो tangent का gradient है वही curve का gradient होगा. ठीक है? हम approximate एक curve gradient को approximate करते थे. Now we know the gradient of the curve. और हम कह रहे हैं कि tangent का gradient of course it's going to be the same as that. ठीक है? So वही concept use हो रहा है यहाँ पे. So we say Poetic. not that much, but okay. Equation of tangent. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? Gradient of the tangent is equal to the gradient of the curve at that point. What about normal? उसका gradient क्या आएगा? So negative reciprocal. Negative reciprocal. Negative reciprocal, right? That's fairly straightforward. So अगर tangent का gradient वही है, तो normal is a perpendicular line. So यहाँ पे इसका gradient क्या आएगा? It's negative reciprocal of that. So gradient of the normal at a point is equal is negative reciprocal of the gradient of the curve at that point. Now, given this, we can find the equations of both of them, right? So how do you find the gradient of the tangent? Our first dy over dx क्या है? 3x square. So dy over dx is equal to 3x square. Let's put x equal to what? जिस point के मैंने ऊपर में tangent बनाया वो क्या है? That is 2 and 1. ठीक है? x की value 2 put कर दें. So gradient क्या आ गया हमारे पास? 12x. That's 3 into 2 square. That is 12. Okay, you've got a point, you've got the gradient. आप gradient point form use कर लें. So that's y minus y1 equals m into x minus x1. Point क्या था? 2, 11. Let's write that here as well. Yes. So this is m. This is your 2, 11. यहाँ पे put कर दें y minus 11 equals 12 into x minus 2, and that's your equation of the tangent. इसको simplify कर सकते हैं if you want. You get y equals 12x minus 24 plus 11, and that gives you y equal to 12x minus 13. So that's your equation of tangent at that point. सर ये आपने जो किया है y minus y1 और x minus x1 ये कहाँ से आया? बेटा gradient point form हमने जो coordinate geometry में discuss की थी. ये ठीक है. Right? आप नहीं थे उस time पे? नहीं सर मैं catch up कर रहा हूँ अभी. Okay, so आप y equals mx plus c से भी कर सकते हैं. वैसे तो. So लेकिन this is very commonly used. आप इससे आपके 2-3 steps बच जाते हैं.
So we'll mostly be using this क्योंकि आपके पास ज़्यादातर जो है A levels के अंदर ना gradient पता होगा, आपको एक point पता होगा, so this is quicker to use. लेकिन आप y equals mx plus c से भी कर सकते हैं. You got the gradient, you got a point, तो आप c find कर लें और आपके पास यही form आ जाएगी y equals 12x minus 13. So that's okay. All right. So what about the gradient of the normal? So gradient of the normal is going to be what? -1/12. Minus 1/12. ठीक है, so negative reciprocal of this. यहाँ पे tangent का 12 था, normal का क्या हो जाएगा? It's going to be -1/12, negative reciprocal of what we had there. So just write it for clarity. This is negative reciprocal of that. Okay. So this is your m. Again you've got a point that is 211. You again use that form, y minus y1 equals m into x minus x1. Point y1 kya hai? That is 11. Gradient now is -1/12. This is the only difference, right? दोनों equations के अंदर सिर्फ gradient आपका different है, and you get x minus 2. You simplify this if you want. You can just leave it like this as well, and that's perfectly okay. So you get y equals -1/12 x plus 1/6 plus 11, and you get y equals -1/12 x plus 67/11. That's what you get. Is this fine? How to find the equation of a tangent and equation of a normal? इसमें कोई Yes, problem sir. basic? हो जाएगा अभी ये? Sir, इसमें Super थोड़ा सा ऊपर जाएंगे. फज़ैन आप क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा हूँ ग्राफ भी दिखा. Okay. सर 67/6 नहीं होगा. Okay, 67/6. Sorry. Yeah. सर आपकी कैलकुलेशन बड़ी ऑफ हुई है. फ्राइडे की क्लास भी देखा. यार बस ये careless errors काफी होते हैं because online में especially ज़्यादा मसला होता है because there are so many things that you are looking at the same time. तो आपका focus जो है ना out हो जाता है थोड़ा सा.